hello listeners, welcome back to my channel. And yes, we were in conversation with Dr.Prableen Kaur, pain specialist and MD Anaesthesia from Jaipur Institute of Pain and Sports Injuries. So अब आज हमारे इस podcast में let's get to know a little more about this field and how to set up the hospital that they have. So yes, doctor, welcome back. Thank you so much, Asrita, for calling me again. Yeah. तो आपका जो हॉस्पिटल है जयपुर में, आई वांट टू नो कि आपने जयपुर कैसे सेलेक्ट किया, एंड ऑल्सो आई थिंक आई नो दैट योर हस्बैंड इज ऑल्सो अ डॉक्टर है, लाइक आप दोनों ने मिलकर ये सेटअप किया है. सो जस्ट कैन यू टेल अबाउट द प्रोसेस दैट यू वेंट थ्रू सेटिंग अप द हॉस्पिटल फॉर माई लिसनर्स. जो लोग आई मीन ऐसे भी काफ़ी डॉक्टर्स होंगे जो अपना खुद का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं. So I just want you to tell some tips for them, like क्या है ये प्रोसीजर, क्या है, कैसे आप एक हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हैं. Correct. So I'd say that my husband, Dr. Prableen Kaur, he's a musculoskeletal radiologist. Okay. So रेडियोलॉजी के बाद भी, जैसे मैंने आपको एनेस्थीसिया की ना फर्स्ट एपिसोड सब स्पेशलिटीज बताई थी, वैसे ही रेडियोलॉजी के बाद भी सब स्पेशलिटीज है, एंड ही हैज चोजन मस्कुलोस्केलेटल. तो आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि मसल एंड स्केलेटन मींस बोन, राइट? यस. सो आई एम अ पेन फिजिशियन. अगेन आई एम डीलिंग विद बॉडी के पूरे पार्ट्स का पेन, तो उसमें भी मसल बोन आ गया, राइट? तो हम दोनों का इस वजह से एक कोलैबोरेशन पॉसिबल हमें दिख रहा था, राइट? ओके. कि I did anesthesia and I got interested into pain management because of all those blocks that I used to see there. And from there, I chose to do fellowship in it. And he, during his residency in radiology, got interested into these joints and all. और वहाँ से he felt कि ठीक है, musculoskeletal radiology को किया जाए. He did fellowships of that. Okay. Also, radiologists do musculoskeletal interventions. So he does that as well. तो अब हम दोनों का कोलैबोरेशन बहुत compatible हो जाता है, because he is an expert of all these imaging. Yeah, right? So like MRI, both under one roof मिल जाते हैं सबको. Correct. मतलब अगर आपकी इमेजिंग वगैरह कराई है तो उसका इंटरप्रिटेशन उनसे अच्छा कोई और नहीं कर पाएगा. Correct. मैंने आपको देखा, मुझे एक डायग्नोसिस बना कि यार इनका ये दर्द है और ये करवाना है इनको. आप अगर ला रहे हो उस चीज को MRI, अगर बहुत सटल भी फाइंडिंग है तो उनसे अच्छा उसको कोई पकड़ नहीं सकता, सिंस ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट, मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट. अगर मुझे लगता है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड इज द मोडालिटी जिससे मैं देखना चाहूंगी, तो ही विल पिक दैट अप इन अल्ट्रासाउंड, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट. रेडियोलॉजिस्ट आर पर्टिकुलरली डूइंग these things, right? And उसमें भी उन्होंने musculoskeletal की ही fellowship की हुई है. तो nothing gets missed, it is picked. And then obviously both of us do interventions. So as in under one roof, from diagnosis to treatment to recovery, because we have a physiotherapy also. Yes. तीनों एक जगह मिल जाता है. So this is the brand value of Gypsy, that you have a pain physician, interventional specialist, you have a musculoskeletal radiologist, and you have physiotherapy under one roof. तो अगर आपको दर्द है क्रॉनिक कोई भी बहुत टाइम से, आप यहाँ अगर आते हो तो सर्जरी को छोड़ के आपको सब कुछ मिल जाएगा. Correct. अगर in this also, Ashrita, we practice very ethically. अगर किसी पेशेंट का मुझे दिख रहा है कि सर्जरी इज द बेस्ट चॉइस फॉर दैट, we make it sure that हम उसको वो ऑफर करते हैं. अगर उसको नहीं कराना है तो ही फिर हम उसको लेते हैं. Correct. Like the patient also should know their condition, right? क्योंकि मतलब अगर आप, हमने जैसे पहले वाले अपने बात की पॉडकास्ट में that it was about osteoarthritis knee, तो अगर आप ग्रेड 4 में आके एकदम एप्ट एज है आपकी, 62 हो, आप ग्रेड 4 हो, तो मैं आपको ऑफर करूंगी कि आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करा लो. अगर पेशेंट बहुत एडमेंट है कि वो नहीं कराना चाहता, मैं उसको समझा भी दूंगी कि यस, दिस इज द बेस्ट फॉर यू, एंड आजकल बहुत अच्छे हैं सर्जरीज, इसकी बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट है, बट फिर भी वो नहीं कराना चाहेंगे. देन इज व्हेन आई विल ऑफर कि ओके, वी हैव जेनिकुलर नर्व ब्लॉक एंड देन रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जो मैं बता रही थी आपको, हीट से जला देते हैं वो नर्व को. तो देन आई विल ऑफर दैट. बट वी डोंट कीप एनीथिंग अंडर कवर
like we are very ethically correct when we are doing whatever we are doing here. लेकिन ऐसे बिना सर्जरी के वो लोग कितने साल मैनेज कर पाएंगे, like other procedures के हेल्प से? Yes, so that is why when we talk of radio frequency ablation, तो उनको हम पूरा समझाते हैं कि आपके इस प्रोसीजर को करने से आपका 1 या हो सकता है 2 साल तक दर्द चला जाए. उसके बाद नर्व्स में शक्ति होती है रीजनरेट करने की, तो वो वापस रीजनरेट करके आपको दर्द देगी. So you have a choice. Either you go for the surgery, or if you are not mentally prepared, अब की बार आप ये करा लो, and then if you eventually, want to get surgery done, you can get it done. Or else, yes, you can always repeat the RFA. But it is just a makeshift procedure for those who are in the apt age of getting surgery done. क्योंकि ये procedure फिर से like they'll have to do again, maybe yearly once they will have to come and do the procedure. Yes, correct. Okay. बट अगर आप करेक्ट स्टेज पे आते हो, जैसे कि मैंने बताया था अर्ली स्टेजेस में, तो जो रीजनरेटिव मेडिसिन है दैट वर्क्स वंडरफुली. उसमें आपके खुद के सेल्स जो है, ग्रोथ फैक्टर्स एंड ऑल, आजकल तो स्टेम सेल इंजेक्शंस भी आ गए हैं, बोन मैरो इंजेक्शंस भी करने लग गए हैं. तो नाउ देयर इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड stem cell also, so that also we are offering our patients कि if you want we can go forward for that, because the process is the same. Commercially prepared stem cells हैं, we have to procure it, जो मतलब which will suit everybody, because what I know about stem cells is newborn babies से जो लेते हैं. No, now they are commercially prepared and yes, they are safe. They have been approved now. Okay. So yes, I would also want to know some misconceptions that are there linked with the pain specialist. मतलब ऐसा कुछ होता है कि कई लोग aware नहीं है इसके बारे में. So if you want to share some experiences about this. Rather than misconception, I would say that awareness is lacking. Yes. Because जैसे कि मैं अभी देखती हूँ कि काफी डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस नहीं है, तो जनरल पब्लिक तो बाद की बात है, क्योंकि कोई रेफर भी नहीं करते कि फर्स्ट आप इनके पास जाकर दिखाइए ऐसे. So like when I meet doctors, there are so many doctors that I tell about that this is what we do, and for them that is a welcome surprise. So like there are doctors जो कि काफी पहले से सीनियर हैं, तो उनको नहीं पता था कि ये सब आ गया है अभी पेन मेडिसिन अलग से ब्रांच. तो जनरल पीपल तो काफी बाद की बात है, बट यस अवेयरनेस कर रहे हैं. ऑल्सो इसमें सारे ऑब्वियसली पेन फिजिशियंस को दे हैव टू टेक दिस ऑन प्रायोरिटी बेसिस कि हम अपने प्रोफेशन के बारे में जितना ज्यादा एफर्ट्स डाल के लोगों को बताएंगे. तो आवर टॉक ऑल्सो इज वन सच मीडियम दैट वी आर इन्फॉर्मिंग द ऑडियंस अबाउट इट. जो भी मतलब टेक्नोलॉजीज हैं, आई जस्ट वांट पीपल टू बी अवेयर, क्योंकि जब इतना कुछ है एंड राइट इन आवर ओन कंट्री वी हैव सो मच एंड सो मेनी फैसिलिटीज. So I think people should know about it and use it for the maximum benefits. Correct. So obviously traditionally जो चीज चली आ रही होती है वो इतने सालों से चले आ रहा है, it will take time, right? अभी क्या है, जैसे हमने बात की कि set of doctor specialties हैं जहाँ पे पेन को लेके जाते हैं. So people generally will take time, but yes, the younger generation are more, knowledgeable. They research a lot, they Google a lot before reaching doctors. So मैंने देखा है काफी patients आते हैं जिनको जब मैं पूछती हूँ कि like from where did you get our reference, तो they say कि हमने तो Google पे टाइप किया था कि ये दर्द, and then we got information about you. So you won't believe that I have patients from Canada and Australia. Oh, nice. Presently, and I was very surprised that like I have not even sponsored myself on Google or anything, but still they searched something and they got my reference, and from that I did online consultations for them. और इसमें मैं ये mention करूँगी with all due respect to everyone, but what I observed is that Indian doctors go in a lot of depth of the problem to diagnose and everything. So what I observed is that एक तो बहुत slow process है दूसरे countries में. I think the audience should actually feel grateful for this also, क्योंकि इंडिया में आपको डॉक्टर लिखेगा MRI और आप तुरंत जाके करा लोगे.
थोड़ा 1-2 घंटा वेट करना पड़ जाएगा, बट आपको तुरंत मिल जाएगा, आप आके दिखाओगे, आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी. बट I was surprised to know this, that in Canada it takes weeks to get an MRI done. Oh my God. So the patient is in pain, the patient is facing back pain which is radiating to leg, but then आपने मुझसे कंसल्टेशन किया, मैंने बोला कि अरे ये तो ये है. That patient has been showing to various doctors, but जो आइडियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं इंडिया में करती किसी का, वो नहीं चल रहा था. So I said we get like MRI करवा लिया है, ठीक है, अलग अलग जगहों का करा लिया है, बट जो मुझे देखना है वो नहीं कराया है. So then I am like कि you have to get this done, and then she tells me that it is going to take me at least 3 weeks to get this done. रिपोर्ट मिलने में 3 weeks, तो फिर उसका प्रोसीजर वगैरह तो और भी डिले हो जाएगा. Yeah. So then I told her कि okay, you have to get this done, but at least we'll start your treatment. So then I put her on treatment and she started benefiting. She got the MRI done. So in this case, I saw the findings later. I already treated her and she started bettering also by the time she had the MRI in hand. Results, Yeah, or like other patients I'm talking about, one of them, she got intervention also done, but she was not benefiting, and physio bhi karwa rahi thi, she was not benefiting. Then finally for her also I started medications, and for the first time in her life, her pain score came to 50% of what it was prior to that, despite all treatments. And because of that, like she had trust in our center, and she actually reached here. And I did a procedure recently for her. Nice. So yes, जैसे आपने कहा कि काफी लोग जानते नहीं इसके बारे में. So I would want you to tell to the students, जो लोग medical students हैं, कि वो इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं. What are the ladders of this course, और इसको अपना करियर कैसे बना सकते हैं. Yes, so it's not only anesthesia branch के लोग जो इस फील्ड में आ सकते हैं. Anesthesia, then physical medical rehabilitation, जिसको PMR बोलते हैं, वो वाले डॉक्टर्स भी. Also, I would say that pain MBBS people also, they can undergo courses and they can also start doing. However, I would suggest कि yes, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट हो गए जिन्होंने मस्कुलोस्केलेटल की करी हुई है ब्रांच फेलोशिप की, एंड पेन एमडी एनेस्थीसिया वाले जिन्होंने पेन की हुई है फेलोशिप, एंड पीएमआर स्पेशलिस्ट जिन्होंने पेन की आगे फेलोशिप कर ली. सो दे आर डूइंग रियली गुड वर्क इन दिस फील्ड. एंड स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्टिल इन प्री मेड एंड मेडिसिन के स्टूडेंट्स, उनको आई वुड से दैट first you be thorough with anatomy. The first basic subject that is being taught in med school is anatomy. So you have to be very thorough with it, because ये पूरा का पूरा जो pain management का field है, it runs on the basis and foundation of anatomy. आपको body की हर body के बारे में ये सब पता होना चाहिए. And then patient हाथ लगा रहा है, मुझे यहाँ दर्द है, तो तुम्हारे दिमाग में चलने लग जाना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट है. मतलब इसको ये हो सकता है, ठीक है. So first thing is be very thorough with it, and the branches that can eventually lead you to this path that we have already talked about. और बाकी सब छोड़ के, अगर जैसे कुछ लोग का सेट पैटर्न होता है कि नहीं ये ब्रांच लेना, इसमें ज्यादा फायदा है, ब्रांच सेट होता है, हाँ, राइट. तो ये सब छोड़ दो. व्हाट आई फील इज इफ यू फॉलो योर इंटरेस्ट यू विल फ्लरिश. मतलब when they enter into that, then they will actually know themselves कि हम किस साइड जाना चाहते हैं, like what is more fascinating for them. Yeah, like all branches are important and there is a reason that they exist, right? Correct. So, हर ब्रांच इम्पोर्टेंट है, और आप उसमें एक बार जाते हो तो आपको उसकी पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम पता चलती है. एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. Just believe in yourself. अपनी अंदर की आवाज सुनो. So I would say here that when I was taking up anesthesia, so I chose anesthesia because out of all the options available to me, this was closest to medicine, and I always wanted to take medicine. Once I took up anesthesia, I realized कि what I said, that इसका तो spectrum इतना है, and you know, like a pain physician, you can set up your own center and then help people. So
finally I went into that field. Correct. Nobody was supportive of me to take anesthesia at that point of time when I was taking. Yeah, क्योंकि उस टाइम पे तो और भी न्यू होगा, क्योंकि अब मतलब लोग इतना नहीं जानते, तो उस टाइम पे तो और भी ज्यादा न्यू होगा. Yeah, and also I come from a non-medical background. I was the first doctor of my family. So yes, for them, they thought maybe, I am taking a hurried decision. I should still think of, taking up another chance and take up medicine. But I somehow felt that my inner core is saying yes. And I went forward with that decision, and I have no regrets at all. Yeah, and we have a successful doctor. Yes. So, last question. I have actually read in an article, there was a person who went for a smile surgery, which is also very weird, जो मैंने पहली बार सुना है. So, during the smile surgery, I have read that he died because of anesthesia dosage. अब I just want you to elaborate this. ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, like या फिर कैसे precautions लेनी चाहिए? Yeah, so Ashrita, anesthesia is a double-edged sword. Okay, it can relieve your pain, and at the same time, अगर trained expert नहीं दे रहा है उसको safely and carefully वही दे सकता है. अगर वो नहीं दे रहा है तो overdose से ये सब हो सकता है. So there is a known entity called LAST, last जिसको हम बोलते हैं, जिसका full form is local anesthesia systemic toxicity. Okay. तो इसका मतलब आपके बॉडी में वो ओवरडोज में होके अब्सॉर्ब हो गया है सिस्टम में, एंड देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग फर्स्ट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि पहले नर्वस सिस्टम अटैक होगा, देन योर कार्डियक सिस्टम. द मोमेंट कार्डियक सिस्टम अटैक हुआ, यू कैन एंड अप इन कार्डियक अरेस्ट एंड इट कैन लीड टू डेथ. So what I could, when I have read that article, what you are talking about, मैंने जैसे ही पढ़ा मैंने यही सोचा कि that anesthesia person was not there. Correct. So these things, देखो last जो मैं बता रही हूँ ये local anesthesia systemic toxicity, this cannot result in death in the hands of an anesthesia trained personnel. Okay? Yeah. क्योंकि हमें इस entity के बारे में पता होता है. हमें पहली बात तो हम ये होने ही नहीं देते, बिकॉज हमें पता है कि कितना देना होता है और किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, सो दैट वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में ना जाए. एंड ऑल्सो मतलब जब आपको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इफ एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज प्रेजेंट ओवर देयर, आई थिंक यू कैन टेक केयर ऑफ द सिचुएशन. करेक्ट. सो फर्स्ट थिंग इज, अगर मान लो एडमिनिस्टर भी एनेस्थीसिया वाले ने नहीं किया, लेकिन अगर एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज देयर, एटलीस्ट अ पेशेंट वोंट डाई. करेक्ट. वो उसी टाइम अगर कार्डियक अरेस्ट हो भी रहा है, रिवाइव हो जाएगा, रिससिटेट हो जाएगा, एंड सेफली that patient will be transferred. Yeah, correct. Observation में रख लेंगे हॉस्पिटल में and then transferred home. But such an incident can actually not happen when an anesthetist is present. Yeah. Yes. So yes, doctor, thank you so much. इतनी सारी नई चीजें आपने हमें बताई हैं, like how to proceed with a pain specialist doctor, like कैसे approach करना चाहिए. So I think काफी listeners को ये बहुत ही नया और informative लगा होगा. So I hope it will benefit a lot of people. And yes, once again, thank you so much for joining in my podcast. Thank you. It is all my pleasure, Ashrita. I am so thankful to you that I got a medium to actually talk about this relatively new branch and create some awareness to those people who are listening. Yes, I am very sure it is going to help a lot of people who are listening to this. So yes, thank you. So yes, listeners, I hope it was very informative and helpful. So again, let's meet in another podcast. Bye. Thank you.